ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। लेट इट बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके। Right. So, it was a nice story which gives us the lesson to be positive always in our life. ठीक है? तो हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है so that we can perform our activities properly and with full energy. Sairam ma'am. Sai Sairam Ram ma'am. beta. Sai Ram. Ma'am, Sairam. I'm Sairam sending the link ma'am. now. Okay. Now Sairam ma'am. put your mic on mute. Sairam ma'am. Okay ma'am. Sairam ma'am. Put your mic on mute. Sai Ram to all. Okay. Now here is the link. Solve it as fast as you can. Got the link? You got the link, beta? Yes, ma'am. Okay, just open it Yes, up. ma'am. Open it up. In the chat box, it is there. Yes, ma'am. Ma'am, I have opened it. Okay, good. Good, good. Ma'am, मेरा open नहीं हो रहा chat box. Chat box open क्यों नहीं हो रहा? चैट बॉक्स तो ओपन हो जाना चाहिए आपका। आप अपनी आईडी से आए होंगे तो अच्छे से हो जाएगा बेटा। और रिमेम्बर, आप गूगल गूगल क्रोम को डाउनलोड करना अपने मोबाइल में भी। मैम हो गया chat box open. हम्म, है ना। गूगल नहीं, गूगल क्रोम आपके उसमें डाउनलोड होगा ना तो कुछ भी खुल जाएगा। तो मम्मा पापा को बोलना गूगल क्रोम को डाउनलोड करें, गूगल को हटा दें। मैम नेटवर्क की वजह से मैं लीव हो गई थी मैम, आप फिर से एक बार लिंक भेज देंगी? हाँ, yes, no problem बेटा। I can send it again. Okay, I'm sending it. Just see. Okay. मैम मेरे Good. आप व्हाट्सएप पे भी देंगी? हाँ, मैं भेज दूंगी बेटा। आई विल सेंड इन दी व्हाट्सएप। उस पे भी आप इसको सॉल्व कर लेना। पर जिसने एक बार अटेम्प्ट कर लिया वो फिर जिसने एक बार कर लिया वो दोबारा नहीं कर पाएगा, है ना। तो जिसका नहीं खुला तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके। कंट्रोल भी। मैम मेरी 10 out of 10। वाओ, ग्रेट। गुड। हरी अप मैम बेटा। मुझे हो गया मैम। मैम मैंने 10 out of 10। गुड, वेरी गुड बेटा। मैम मैं मुझे 10 out of 10। मैम मेरे 9। 9 हो गए। दैट मीन्स यू आल्सो प्रिपेयर्ड वेल। ओके, गुड। रिद्धिमा के नहीं। मैम 10 out of 9। यस, नो प्रॉब्लम। गुड। 10 out of 10। मैम हाँ, 10 after 9। ओके, ओके, वेरी गुड। वेल डन, ऑल ऑफ यू। मैम आप रिसेंड कर सकती हैं रिंग को? मैम 10 after 10 है मेरे। कितने रीसेंड करना है बेटा? मैम मेरे अक्षिता? 10 after 10 है। हाँ, गुड। नो प्रॉब्लम अक्षिता, आई एम सेंडिंग इट अगेन। अगेन व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर इशू बेटा, आई विल सेंड इट इन ऑन दी व्हाट्सएप आल्सो। ओके, आई विल सेंड इट। नो प्रॉब्लम। ओके, shall we start our class? Shall I take revision orally? मैम मेरी भी 10 after 10 है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा आपके यहाँ थोड़ा सा अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करो विंडो के पास हो तो। मैम 10 आउट ऑफ 10। आप अपने डिवाइस की पोजीशन चेंज करो बेटा, जहाँ नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना विंडो के पास में मैम रखो। मेरी लिंक ओपन नहीं हो रही, क्या व्हाट्सएप पे भेज सकती है? Yes, I will send it later on after the class. Okay? After the class. क्लास के बाद भेज। मैम मेरे 10 में से 9 आए। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। मैम मेरे 10 आफ्टर 10 आए। हाँ ओके नाउ मैम मेरे भी 10 आउट ऑफ 10 आए थे। यस बढ़िया। Now I have already sent a worksheet. I sent the worksheet to you all. I'm asking the questions now. Okay? Come on. Shall I start, Buddha? Shall I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we have to do revision of unit 2. So my first question is, why our nose is important? What is the importance of our nose? Okay. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम ब्रेथिंग के लिए नोज इम्पोर्टेंट होती है। Okay. क्लियर। Akshita. मैम योर वॉइस इज क्लियर। मैम मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए। Good. Mute yourself, all of you. First, you mute yourself. Yes. Adarsh, what is the answer? Why is our nose important? Adarsh. मैम ब्रीथिंग। Nobody will speak. Only Adarsh will answer. Only Adarsh. Adarsh left हो गया. Very good. Advika. What is the importance of our nose? Why our nose is important? मैम क्वेश्चन। Advika, मैम why द our नोज nose? इज इम्पोर्टेंट फॉर अस ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग। Yes, breathing and smelling. मैम ये मनस्वी ने बताया है। अब हाँ अद्विका ने नहीं बोला ना, तो मनस्वी को मैं रिमूव करने वाली हूँ। फिर मैं अगली बार अगर ऐसा हुआ तो आई विल रिमूव मनस्वी फ्रॉम द क्लास। ओके, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन इज अद्विका, ओपन योर माइक। Why does Yes, ma'am. yes? Why does the poet feel that the nose is a funny thing? According to poet, nose is a funny thing. Why? मैम मेरा लिंक हट गया किसी की। नव्या पहले म्यूट करो अपने आप को। नव्या म्यूट करो। सोनम अभी नहीं, अब मैं बेटा व्हाट्सएप पे भेजूंगी, अभी हो गया टाइम है ना, व्हाट्सएप पे भेजूंगी मैं। ठीक है अद्विका, Yes, ma'am. व्हाट इज द आंसर बेटा? मैम क्या हम उस हाँ व्हाट इज द मैम आंसर? मैम क्या हम उस फॉर्म को वापस से फिल कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये वन ओनली वन। Advita, don't know the answer, beta? Okay, Advita. Advita, Yes, ma'am. what is the answer of the question? The poet is feeling in the poem that nose is a funny thing. Why? मैम बताइए इसका आंसर। Don't know the answer? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? Because it sticks Yes. because it sticks out of the face like a handle. Yes, it is sitting like a handle on our face. मैम Is a nose is sticking like a handle on our face. Okay. So मैम मैं that is बताऊं? why poet thinks that it is a मैम मैं funny बताऊं? sticking on our face. Who wants to answer? Better write in chat box.
Okay, use chat box. Who wanted to answer? मैम बताओ. कौन? नाम बोलो. Hmm? मैम नव्या. Okay, Navya. Tell the answer. मैम नव्या. Navya, speak out the answer. The poet feels that Hmm. the poet feels that the nose is funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. Yes, very good. Okay, have you understood all of you? Now tell me. Yes. Okay, fine. Hmm. Here. Uh, Akshita, unmute yourself. Yes, ma'am. Do you like your nose? Yes, ma'am. Why? Yes, I like my nose because it helps me in breathing so I can live. Yes, good. Anybody else? Aishwarya? 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 No response. Am I not audible? Okay, Amolika? Ma'am, yes, I like my nose because we breathe with help of nose and we smell everything from nose. Yes, because our nose helps us to smell and breathe. That is why I too or we too like our nose. Okay. Name the things that make you laugh. Yes, here. Ananya. Ananya, unmute yourself. हाँ. Yes, ma'am. Name one activity that make you laugh. जो पोएट था उसको अपनी नाक देखकर हंसी आती थी. आपको क्या देखकर हंसी आती है? What makes you laugh? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. What makes you laugh? मैम उदिता. मैम make me laugh. Okay. Yes, Udita. Listening to jokes make me laugh. Yes, very good. Durva. Ma'am, Atharv. Ma'am Riddhima. Just wait, beta. Ma'am, Satvik. Okay, Amolika. yes, ma'am. Ma'am, tickling, joking, choking, or clapping. Okay, good. Yes, Riddhima. Ma'am, someone slips in the rain. I am laughing loudly. Okay, when somebody slips in the rain, that makes you laugh. Okay. Anybody else? Any other activity? Hitansh? Akshita? Fast. Ma'am, Anshuman. Ma'am, someone else is laughing. What is Okay. Anshuman. Ma'am, when someone else is laughing. Yes. Anshuman. when someone lay down? I am laughing. One by one. Answer from Ma'am, you. funny jokes. Ma'am, funny jokes. When okay, very good. Funny joke. Anshuman, your answer. Ma'am, Ma'am, funny cartoons. Akshita, now. Ma'am, funny videos. Funny cartoons. I'm not able to hear you all the time. Akshita, Funny videos and cartoons. okay. Mute yourself. Ma'am, what is the question? Mute yourself, Akshita, now. Ma'am, funny movie. Question. Yes. Ma'am, what is the question? Ma'am, someone tired to run. Mute yourself. Riddhima, mute yourself. मुझे बीच में आपकी आवाज नहीं चाहिए रिद्धिमा प्लीज. है ना? सभी बच्चे what बोलेंगे 35 the question? स्टूडेंट्स बोलेंगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड यू ऑल. Ma'am, what is the question? हाँ, नव्या. Ma'am, what is the question? नव्या, आपने आंसर बोला था क्या?
Akshita, mute yourself. मैम मैं लीव हो गई थी तो मैम मेरे को क्वेश्चन कोई बात नहीं, म्यूट करो पहले. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. Akshita, hurry up, mute yourself. हाँ नव्या. My question was, name one activity that makes you laugh. मैम प्लेइंग डांसिंग सिंगिंग. Okay. When you play, you laugh. Okay. Good. मैम आपने क्वेश्चन क्या बोला था? मैं लीव हो गई थी एकदम से. मैं लीव हो गई थी. मैम उदिता. मैम जब आपने बोला था मुझको सुनाई नहीं दिया था, क्वेश्चन नहीं सुना. तो अब मैं बोल दूं. Udita. Watching funny stories. Okay, funny story. Akshita, why you are with two these devices? You have joined from two devices. Akshita. Okay, next question. Durva, mute yourself. First of all, Yes, ma'am. Mute yourself, Durva. Okay, Yatharth, unmute yourself. Yatharth. Yes, ma'am. हाँ. Answer me. Who was Shetty? Shetty is a musician. Shetty was a magician. Okay, good. Yashashvi, unmute yourself. What happened one day when Shetty was returning? Yashashvi, unmute yourself. Yes, ma'am. What happened one day when Shetty was returning to his home? मैम Hmm? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. मैम अथर्व. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. बेटा आप ये चैट बॉक्स मैम में भी लिख अंशुमन. सकते हो. ओके, डू राइट इन चैट मैम बॉक्स. अंशुमन. चैट बॉक्स इसमें शाउट करोगे तो इससे मैम समझ यार नहीं आएगा. वॉइस क्लियर. हाँ, विनम्र हो गया. विनम्र बोलना है क्या? यस मैम. हाँ, what is the answer? What happened one day when Shetty was returning home? Shetty जब घर मैम द आया. रेन इज कमिंग. Okay, it was raining. मैम द रेन. अक्षिता, मैम It was raining. मैम क्वेश्चन बोलिए, फिर से रिपीट करिए मैम क्वेश्चन. मैम इट वाज रेनिंग हेवीली. मैम इट वाज. मैम बिकॉज़ इट स्टार्टेड टू रिपीट कर दीजिए. and Shetty did not want to get wet in the rain. Yes, good. मैम क्वेश्चन रिपीट करिए. किसके लिए कौन पूछ रहा है? वार्षिका. यस मैम. मैम रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं लीव हो गई थी. बेटा चैट बॉक्स में इतने सारे माइक खुले. नव्या का खुला, नन्हा का खुला, अक्षिता का माइक खुला हुआ है. माय क्वेश्चन वाज it was well answered by this Udita. Why did he then what happened one day when Shetty was returning home? Okay, ये answer Udita ने दिया अभी answer. Because it was raining heavily and Shetty was And Shetty did not want to get wet in the rain. Shetty did not want to get wet in the rain. Okay, fine, good. मैम Yes. मैम आप मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि जब आपने पहले पूछा था मैं सुन नहीं पाई थी. मैम आप ये क्वेश्चन वर्कशीट्स में से पूछ रही है ना कल की? हाँ. यस मैम. आपने किया है तो अच्छी बात है. नहीं किया है जिसने तो वो वर्कशीट. मैम किया है मैंने, इसीलिए मैं बोल रही वेरी थी. गुड, वेरी गुड. यस, वर्कशीट में भी पूछ सकती हो, वर्कशीट से बाहर भी पूछ सकती हो. ओके मैम मैंने भी. यस मैम. Why did Shetty looked around? Why did Shetty look around when it was raining?
When it was Ma'am. raining, Chetty looked. Ma'am, Durva. Yes, Durva. Durva. Ma'am, Shetty look around for shelter because it is heavy rain. It is raining heavily. So he wanted shelter. Ma'am Okay. Udita. Yes, ma'am. Yes. Why did he run towards the little fir Ma'am tree? Manasvi. Ma'am, Shetty ran toward the little fir tree because it was raining heavily. It was raining heavily and he wanted to protect himself. And Okay. and Yes. and he and he wa- and he wanted to get shelter under the fir tree. Huh. Okay. Okay. Now come Manasvi. Manasvi. Yes, ma'am. Huh. Uh, See, Chetty was very happy that he did not get wet. Okay. Yes. What was his? Just wait a little. Uh, he asked for a tree that he will grant 4 wishes Yes. to it. Okay. Now, why was the fir tree sad? The fir tree was very sad. So, why was the fir tree sad? The first Ma'am. man is feeling sad because it has the life no bird named on him because its little shaped leaves. Okay, because of The it. fir tree is feeling sad because it has little life leaves मैम मुझे तो बोलने नहीं दिया. on him. Manasvi, now unmute your, you are unmute. Now मैम tell me. अक्षिता ने बोल दिया. हाँ वही इसीलिए अब अक्षिता को मैं रिमूव करने वाली हूँ. Why was the fir tree sad? Come on, you tell me the answer. The fir tree said because the fir tree leaf is out. How? Ma'am, Okay, Hitansh. Ma'am Amulika Sharma. Hitansh, Ma'am. will you answer? Can I tell the answer? Hitansh, answer me, beta. What is the answer of the question? Why was that fir tree sad? Ma'am, can I tell the answer? But ever make Very good. Very good. Yes, Anshuman. Anshuman. Yes, ma'am. What is the answer? Ma'am, the fir tree was sad मैम because आपकी आवाज नहीं आ रही. middle shaped leaves, no birds made their nest ever on it. Very good. Yes, Amolika. Ma'am, can I tell the answer, Udita? Yes, ma'am. Just wait. After Amolika. मैम किसी की भी आवाज नहीं आ रही. Amolika. But the goat came and ate all the green leaves. Second wish of the fir tree is gold leaves. But man came and stole the gold leaves. Third wish of the fir tree is glass leaves. But a wind blew and her glass leaves broke, so that the fir tree is sad. Okay. Now Amol. Okay, fine. Udita? Yes, Udita, just wait. Wait, beta. Wait a little. Anish, unmute yourself. Yes, ma'am. Who stole the gold leaves of the fir tree? Ma'am, a man stole the gold leaves of a little fir tree. Okay. Now, what was the response of the tree then? How he responded then? What was his feeling? Its feeling then? Ma'am, his feeling was so sad. It was again sad. Sad. Okay. Now coming to the next one. Atharva. Yes, ma'am. What happened to the glass leaves of the fir tree?
Ma'am, the wind blow have, at the night and all the grass leaves mm, fall from the fir tree. Okay, very good. Anybody Ma'am, else? can I say it? Yes, yes. Ma'am, Ma'am, Riddhima. ma'am, Okay, at very the wind blew very, very. The Ma'am, wind blew at the night, and the glass leaves of the fir tree broke. broke. And what happened when the glass leaves broke? Yes, Riddhima, hurry up. Fir tree became very sad and wanted its needle-like leaves again because no goat eat them, no man can steal them, and will do no harm to them. at night the wind blew, all the glass leaves are broken so that it won't eat needle leaves like again. Yes, okay, beta. Yes, good. Very good. If you have read the chapter, you must be knowing all the answers. I know that. I'm 100% sure. If you have read the chapter, okay. So chapter reading is must. Okay, go through the chapter again and again, beta. Now tell me, uh, the fourth wish of the fir tree was he wanted its old needle-like leaves again. Why? Who will answer? Sanket? Sanket, are you listening to me? Sanket? Yes, ma'am. Huh. Can you answer the question? Yes, ma'am. Yes. What is the answer now? The pear tree Fir tree. tree Hmm. Man, the fir Yes. tree want its needle-like leaves back because goats do not eat them, no man can steal them, the, and the wind will do them no harm. Ma'am, time is over. Ma'am, what is your question? I cannot hear. Ma'am, time is over. Just wait. Just wait. My question was, in the end, the last wish of the fir tree was that it wanted its old needle-like leaves. Okay. It wanted its leaves. Why? Ma'am, your voice is not clear. Why it wanted Ma'am, your old voice is clear. needle-like leaves again? Your voice is not clear. Goats do not eat them, no man can steal them. Not able to hear better. Who is answering? Class, come. Yatharth, you are answering? Your mics are open. And I am not able to notice it. Who is answering the question? Okay. Shantanu, answer me. The fir tree wants its needle-like because it them, steal them, wind will do them no harm. Hmm. Anybody else? Anybody Ma'am else? Udita, Yes, Udita. what is your question? My question is, the fir tree wanted its old needle-like leaves again. Why? Ma'am, because the little fir tree wanted its needles, old needles like leaves again because uh,
that no because no goat eat them, because goats do not eat them, no man can steal them, and the wind will do no harm to them. Yes, very good. Now, what do you learn from this story? What is the moral of this story? Ma'am Yes, Akshita. yes, Akshita. Akshita. Ma'am, Hmm. be yourself. You are good. Yes, very good. Satisfied with what you have. जो आपके पास है उसी में खुश रहना. The God that the You God should made be you happy always with good. what you have. Yes, we should be happy with what We we should have. be happy with get. Correct. मैम Okay. भगवान ने हमें जैसा बनाया हम वैसे ही अच्छे हैं. Yes, very good. हमें जो मिलता है हमें उस पे खुश रहना चाहिए. Yes. जो मिलता है उसी में खुश. हम जैसे हैं अपने को वैसे ही खुश रहना चाहिए. लव योरसेल्फ. आपके पास जो चीजें हैं उसको प्यार करो. Because खुद को प्यार. everyone have different values of them. Yes, all are unique, all are different. Okay, I know better, time is over. But I know. Okay, let's do Shanti part. Ma'am, all are different from each other. And all are having different qualities. So we must appreciate everybody. Okay. Everybody has an equality. Yes, all the qualities means one or the other qualities. We all possess one or the other quality. किसी में बहुत अच्छा सिंगिंग की क्वालिटी है तो कोई बहुत अच्छा स्टडीज में है, कोई बहुत मैम अच्छा कोई मैथ कोई करता ड्राइंग है, की. कोई कुछ करता मैम हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये है तब तो मैं यही खरीदूंगा. जो हमें मिलता है हमें उस पे खुश रहना चाहिए. वेरी गुड. चलिए, come on. Ma'am, Join our ma'am, hands for complete part. Okay, चलिए. ma'am, I have one example. Who wanted to give example? Ma'am, रिद्धिमा. हाँ, रिद्धिमा, yes. मैम जैसे कि किसी के पास एक नई सी अच्छी सी कार आई है तो दूसरा भी ये सोचता है कि मेरे पास क्यों नहीं है. हाँ, है ना. हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं बेटा. आप क्लास में आते हो तो बोलते हो मम्मा के पास जाके कि मम्मा उसके पास नया वाटर बॉटल है, उसके पास वो बैग है, आई वांट द सेम बैग, आई वांट सेम वाटर बॉटल. दैट इज व्हाट. ओके. तो पेरेंट्स को खरीदना पड़ता है जबकि हमारे पास जो चीजें हैं वी नीड टू बी सेटिस्फाइड इन दैट ओनली. ओके, लेट्स जॉइन आवर हैंड फॉर शांति पार्ट. ओके, टू क्लोज द सेशन. ओके. Shanti. Sarah ma'am, bye ma'am. Sarah ma'am, bye ma'am. Bye beta, bye. Sarah ma'am.